Yeah, so hello everyone. So in the last video, we discussed about the Galilean transformations and transformation equation. So in this in this video, we will discuss about the transformation of length, transformation of acceleration, transformation of velocity. कि लेंथ एक्सेलरेशन वेलोसिटी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं अंडर डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कि अगर मेरे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है एस और एस डैश तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगे व्हाट विल बी द इक्वेशंस फॉर देम लेट्स डिस्कस ओके सो एंड व्हाट विल बी द इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ओके कि न्यूटन के जो नियम है वो किस तरीके से बिहेव करेंगे लेट्स हैव अ लुक सो फर्स्ट ऑफ ऑल first one is transformation of length transformation of length अगर एक ऑब्जेक्ट है ओके ऑब्जेक्ट ए बी लेंथ ऑब्जेक्ट है कि suppose there is a road AB ठीक है in S and S dash frame of reference ठीक है lengths are measured in this S and S dash frame of reference. Now let's make a neat diagram. At first it is like कि S और S dash जो है दोनों एक ही पॉइंट पर है S और S dash दोनों एक ही पॉइंट पे है टाइम t is equal to 0 at time t is equal to 0 at time t is equal to 0 पे both are at the same place ठीक है this is the road AB ठीक है सो AB का जो लेंथ है this is the x1 this is x2 ठीक है length of the road is what x2 minus x1 on the x-axis this is the x-axis okay now see what do we have this is another situation where the frame has moved okay at some particular time t at time t is equal to t ठीक है ये s frame है और ये s dash frame है ठीक है and the road is here AB okay now this road s के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे और s dash के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे what are the distances कि x के रेस्पेक्ट में अगर मैं मेजर करता हूँ so x के रेस्पेक्ट में this is x1 this is x2 बट अगर s dash के रेस्पेक्ट में मैं मेजर करता हूँ इसी को तो s dash के रेस्पेक्ट में मेजर कहाँ से करेंगे यहाँ से मेजर करेंगे this is x1 dash and this is x2 dash okay after time t now length of the road is what x2 minus x1 s के अंदर और x2 dash minus x1 dash s dash frame के अंदर we are considering कि this frame is moving with velocity v okay this is understood from our previous videos also now so using the transformation equation can we write x1 dash is equal to x1 minus velocity t into velocity into time t this is our first equation and using the same method x2 minus vt this is second equation ठीक है
length of the rod, length of rod in S frame. S फ्रेम में क्या है, x2 माइनस x1, ठीक है, बट इन S डैश फ्रेम में क्या है, इन S डैश फ्रेम, इन S डैश फ्रेम x2 डैश माइनस x1 डैश, ठीक है ना। अगर लेंथ निकालनी है, ओके, सो दिस x2 डैश माइनस x1, x2 डैश माइनस x1 डैश, इसको क्या, इन दोनों इक्वेशंस को, दीज टू इक्वेशंस कैन बी put it here, yeah, so x2 minus vt माइनस x1 माइनस प्लस का vt हो जाएगा, ठीक है, दिस vt एंड vt विल कैंसिल आउट, तो x2 डैश माइनस x1 डैश will be equal to x2 minus x1. This is an equation we got. So length of the rod is same either in S frame or in S dash frame. From this equation, though, this much we can tell. Okay, what we can tell from this equation, that, let me change the color, length of rod is same in either frame of reference, in either frame of reference. दोनों में से किसी भी frame of reference को उठाते हैं, length of the rod is same. Now, अगर जब ऐसी प्रॉपर्टी होती है when दो frame of references के अंदर the same number is appearing, then it is said to be invariant to the transformation. It means कि length जो है वो invariant है. To what? To Galilean transformations. Under Galilean transformation, S और S dash दो frame है, S frame रेस्ट पे, S dash frame moving है v velocity constant velocity के साथ, then under this two frame of references when we measure the length, then it is invariant. So this is the conclusion we have come to right now. When, okay, let me write this, when a property, when a property is characterized by the same number in two frame of references, it is said to be invariant to the transformation. It is said to be invariant to the transformation. So length is invariant. Length is invariant to the transformation. Length is invariant to the transformation. Okay, now this is transformation of length. Now we will move ahead to the next point, which is transformation of velocity. Transformation of velocity. Okay, now
अगर एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, sorry, with respect to some time, u and u dash be the velocity measurements in respective frame of references s and s dash. Okay. then ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे एस फ्रेम के अंदर और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे एस डैश फ्रेम के अंदर. ओके, नाउ an object is moving in plus x direction with respect to time. Now let u and u dash be velocity measurements. U and u dash be velocity measurements in respective frame of reference s and s dash. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट इन एस फ्रेम इज कहां से कहां तक, x1 टाइम t1 पे है, वहां से कहां पे जाएगी x2 एट अ लेटर टाइम t2. ठीक है, इन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट in s dash frame is s dash frame के अंदर अगर x1 dash at a time t1 dash से कहाँ पे x2 dash at a time t2 dash. now अगर वेलोसिटी का मेजरमेंट हम देख रहे हैं, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कहाँ से कहाँ पे मूव किया है. ठीक है, तो वेलोसिटी का अगर मैं लिखूंगा, वेलोसिटी इन फ्रेम एस फ्रेम के अंदर वेलोसिटी जब मैं लिखूंगा, then that velocity will be u is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1. And from above we have two equations. Those equations are x1 is equal to x1 dash plus v t1 dash and x2 is equal to x2 dash plus v t2 dash, जहां पे t1 dash is equal to t1 and t2 dash is equal to t2. टाइम के अंदर तो कोई चेंजेस होंगे नहीं. ठीक है, put these values into this equation, put them. We have u is equal to x1 dash, sorry, x2 dash plus vt2 dash, डैश को मैं हटा भी दूं अगर यहाँ से, t2 माइनस x1 डैश माइनस vt1 अपॉन t2 माइनस t1. ओके ओके, सॉरी, ये हम रखेंगे यहाँ पे. ओके, सो x2 dash minus x1 dash upon t2 dash minus t1 dash माइनस प्लस वेलोसिटी बाहर ले लेंगे, t2 dash minus t1 dash अपॉन t2 dash minus t1 dash, ये कैंसिल होगा. u, what is this,
फ्रेम एस डैश में जो वेरिएंस हो रहा है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 डैश है, तो दिस इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश. So we have the equation u is equal to u dash plus v. This is the velocity we have. This is the velocity. U is equal to u dash plus v. Okay. So we arrive at this result. Here also we can say what? Is velocity is variant or invariant? What can we say? Velocity variant hai, invariant. From this equation, u is not equal to u dash. Okay, so we can say that it is not invariant. Okay, so we will say that velocity is not invariant to Galilean transformation. Velocity is measured by the observers in two frame of references are not the same. Okay, position, length of the particle was variant. Velocity is not invariant. Now let's move to the third point. Transformation of acceleration. Transformation of acceleration. Considering if you want to take notes, please pause the video and take the notes from here. Okay, this is the whole derivation, we can say. Now let's move to transformation of acceleration. Transformation of considering accelerations a and a dash as measured by observers in their respective frame of reference. We have acceleration जो है वो du by dt, change in velocity by change in time होगा, ठीक है. एंड दूसरे फ्रेम के अंदर a डैश जो है du डैश अपॉन dt, ठीक है. Now u dash is equal to u minus v. Already we have seen, so put it into this equation. Acceleration is equal to d by dt of u minus v, then क्या आएगा, du by dt minus dv by dt. If v is constant, then this quantity will become zero. Only this quantity will become zero. What will be there? Acceleration is equal to du by dt. This du by dt is what? This is acceleration. This is acceleration. Okay. Now, so acceleration also remains invariant under Galilean transformation. Okay. So acceleration measured by two observers in two frame of reference respectively are the same. Okay. So we can write that acceleration is thus invariant to Galilean transformations. Acceleration is thus invariant to Galilean transformations. This is what we have now.
टॉपिक तो बेसिकली क्या था कि इनवेरिएंस ऑफ द न्यूटन लॉज, न्यूटन का लॉ फॉर एग्जांपल सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू ma, कि एक फ्रेम में S में और दूसरे फ्रेम S डैश में हम जब मेजर करते हैं, ठीक है, तो मास जो है, तो मैं अगर कहूँ कि अगर F डैश इज इक्वल टू F आ जाता है, then we can say that the Newton laws are invariant, otherwise we cannot say it, ठीक है। तो what are the two components? This is one component is mass will be under, because अगर when Galilean transformations जब यूज होते हैं when velocity is very very less than c, मतलब जो नॉर्मल सिचुएशंस हैं उस टाइम पे we use this, ठीक है। in normal situations when velocity is very very less than c, then mass doesn't change at a velocity, then mass m dash will be m, and acceleration अभी हमने निकाला है, acceleration will be a, so f dash is equal to m dash and a dash is equal to ma is equal to f, so आपका f dash is equal to f, so we can say the laws, we can say that f dash is f, it means Newton's laws are invariant under Galilean transformations. This is the invariance of Newton's laws under Galilean transformations. Okay, okay, thank you. So this is all for today. In the next video we will discuss some other things. Till then, enjoy. Thank you. Like, share, subscribe, don't forget it.